morning students. Today we are going to start our next unit, that is guest relation. Guest relation in vertebrates and invertebrate. Firstly we are going for the basic term, that is guest relation. So what is guest relation? Guest relation can be defined as a process by which presumpting area of a specific organ rudiment present on the surface of blastula. As we study in the previous video, blastula पे हमने क्या किया था, फेट मैप की स्टडी की थी. तो जो ब्लास्टुला के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका मूवमेंट मूव टू देयर स्पेसिफिक पोजीशन वेयर दे अकर इन द अडल्ट इंडिविजुअल में उनकी जो पोजीशन होती है ब्लास्टुला के सरफेस से उनका माइग्रेट कर जाना टू देयर एक्चुअल पोजीशन, टू देयर एक्चुअल डेस्टिनी, दैट इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन. So gastulation is a process by which a prospective या फिर presumpting area of a specific organ rudiment present on the surface of blastula move to their final destiny is known as gastulation. So what is gastulation? This one is gastulation, and there is formation of 3 germ layer, but exceptionally in the Amphioxus there is only 2 layer are formed, that is ectoderm and endoderm. Ecto and endoderm. But in all the vertebrates including human being 3 germ layer का differentiation होगा ectoderm, endoderm and mesoderm. That is known as gastrulation. Mesoderm. So this is gastrulation. So what are the characteristic feature of this gastrulation? Firstly, rearrangement of blastomeres. जो blastomeres होते हैं उनका rearrangement होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, वो ब्लास्टुला के सरफेस से माइग्रेट कर जाएंगे और तीनों जर्म लेयर वहां से डिफरेंशिएट होंगी. 3 प्राइमरी जर्म लेयर, इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ. अगर ग्रोथ है भी, इफ देयर इज लिटिल बिट ग्रोथ, सो दिस ग्रोथ इज टोटली इनसिग्निफिकेंट. कोई भी ग्रोथ नहीं होगी. अगर कोई थोड़ी बहुत है तो वो भी इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पे होगी ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन. क्लीवेज का जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग में मैं स्टडी किया था कि क्लीवेज से ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगी, बट आफ्टर द ब्लास्टुला फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन क्लीवेज प्रोसेस इज स्लो डाउन नाउ, बट metabolic activities are increased, so metabolic rate and oxygen consumption power of the cells is also increased. Next one is chemosynthetic activities occur. जो chemosynthesis है, chemical reactions यहाँ पे normally होंगी, वो प्रोसेस यहाँ पे increase हो जाएंगी. और जो न्यूक्लियाई है, that is physiologically active to control all the processes which are going on in a embryo. So these are some characteristic feature of the gastrulation. Now process of gastrulation. Gastrulation is a dynamic process. Here is a movement of cells from surface of the blastula to their final destiny. So this one is a dynamic process. Here some intrinsic forces are present. In the blastomere, there are some intrinsic forces are present which are responsible for this kind of movement from the surface of blastula to their final destiny. So मेजर जो प्रोजम्पटिंग एरियाज होते हैं सरफेस पे ब्लास्टुला के, फॉर्मिंग एरिया ऑफ ब्लास्टुला आर अरेंज टू अलो द कन्वर्जन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर अडल्ट. तो वहां पे क्या होगा कि जो ब्लास्टुला के सरफेस में सेल्स हैं वो उनकी ड्यू टू द दीज मेजर फोर्सेस, ये जो फोर्सेस होते हैं इंट्रिंसिक फोर्सेस, बेसिकली नोन एज मोर्फोजेनेटिक फोर्सेस. ये क्या होते हैं आपके मोर्फोजेनेटिक फोर्सेस, एंड यू कैन से गेस्टुलर फोर्सेस होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस माइग्रेशन के लिए ब्लास्टुला के सरफेस से टू देयर फाइनल डेस्टिनी विच form the particular organ on the particular plan of the body of that particular individual. So this one is the process of gastrulation, that is a dynamic process. Now we are going for the morphogenetic and the gastrular movement, also known as formative movements sometimes. Now these morphogenetic, these intrinsic forces are basically of 2 types. Firstly epiboly and second one is known as emboli. So this epiboly में क्या होगा, आपके पास तीनों जर्म लेयर की फॉर्मेशन हो रही है. आउटर वन इज एंडोडर्म, मिडल वन इज मेसोडर्म एंड सब लोअर वन इज नोन एज एंडोडर्म. सो एपिबोली इज द स्प्रेडिंग ऑफ ectodermal cells which form the neural system and which form the skin. So spreading of these ectodermal cells which are basically present on the upper hemisphere, animal hemisphere, over the inwardly moving prospective mesoderm and endoderm of the blastomere, having property, flattening की property होती है multiplication and the rearrangement. You can see from this diagram, this one is the mesoderm, either side is the endoderm, and this complete is known as ectodermal cells.
These ectodermal cells having the inherent property of flattening. You can see these are flattened, and finally you can see these get multiply, and finally there is a formation or archenteron is formed. This archenteron is the future gut or the alimentary canal, you can see. So this one is the first type of morphogenetic movement, that is epiboly. Epiboly, that is the spreading of ectodermal cells. You can see these are the ectodermal cells. So these ectodermal cells spread over the mesoderm and the endodermal cells and cover up all the surface of the entire hemisphere and finally form a cavity, a pore, that is known as archenteron or a future gut, or you can say a blastoporal lip. So this one is the first type of gastrular movement, that is epiboly. Next we are going to study about the emboly. Thank you.